के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई जज ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो पुलिस को कहेगा या किसी एजेंसी को कहेगा। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का फोर्स उसके अंडर में होना चाहिए, जो कंप्लायंस, जिस तरह वो माजी में काजी खुद कंप्लायंस करवाते थे, ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है। तो हम कहते हैं कि ऐसी समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंडर नहीं है? नहीं सर है, तो फिर क्या लेकिन यही तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अंडर मैनेज पे अमल करे, ना करे तो उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। चले आगे, चले नेक्स्ट पे करते हैं ना, कोई नई पॉइंट बताएं तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बस सर ये मैंने की कि प्रोब होना चाहिए एक। अगर बाद में कोई ख्याल आए बता दीजिएगा, अभी तो चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा। थैंक यू सर, सॉरी आई हैव टू पुश यू बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल। लेटर ऑन वी हैव टू स्पीक ऑन द प्रोविंशियल बार काउंसिल एज वेल, पंजाब बार काउंसिल, वो बाद में हम करेंगे बाकी सीनियर्स के बाद। पिटीशन ना लो करें सर प्लीज। देखिए आपकी जो बातें हैं कि जी कंटेम्प्ट लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है, ये अब कोई लोग इनसे डिसएग्री कर रहे हैं, कोई हम लंबी लंबी तकरीरें सुनने नहीं बैठे। बस यही है सर, बस ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए सुप्रीम कोर्ट आ जाए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। हम सजेस्ट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। The reality is very different. We all know what is the reality. निकालें, आपका नंबर क्या है? आप हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स तो देखें, वो सारे जजेस हैं, ये वो गलत नहीं कह सकते हैं। आप जिस तरह भून साहब ने कहा है उसको देख के हो सकता है आपका व्यू चेंज हो जाए। जी व्हाट नंबर आर यू फाइल? 398 I've been told. 398 CMA 398 of 2024. जो अभी दिया आपने? जी मैंने आज ही दिया। आपने तो हाई कोर्ट की देख ली है ना? Do you want to read it or you want to? I'll be reading it out. But before that, may I very humbly request all the honorable judges here. Not to interrupt you. My lord, I am Can I make more a than request happy on to your have behalf? interruptions. What I'm requesting here is that when we say on live TV, which the whole nation is watching, that the Supreme Court was complicit, or for that matter that the judges were compromised, the Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. And these hearing, and what happened in the last state of hearing is actually eroding public trust. And this trust hearing is eroding public trust. My lord, what was said in the hearing on the last date, and I'll be pointing it out when I read from President Saab, who are we answerable to? We are answerable to firstly to Almighty Allah, सुन ले, and then to any other. Let him complete it. Please, otherwise we'll be here. आपने कह दिया ना। देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट sorry to say I have to interrupt. Please proceed with your case. People must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that. My lord, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? So let me I mean, first, sorry, I will put it very bluntly. If you are complicit, don't sit here. Let me start from there. Let me start. I'll read. Let's not, my lords, let's not enter into a debate. It is not I that I have said it. It is the Attorney General who said it. Everybody said it. In the High Well, Court, yes. It is so in the High Court's comments. But in the High Court, there were judges. Well, let me start from here. I very humbly draw my lord's attention to para G at page 5 of the CMA. I'll read that first and then I'll start. It is deeply concerning to note that the judgment dated April 29, 2024 by a judge of the Islamabad High Court, which explicitly stated, and I quote, "The letter is not in the nature of a complaint, as the SGC has no mandate to investigate the actions of intelligence operators, and was also not a communication meant for public consumption. It was a confidential intra-institutional correspondence that got leaked to the media and has attracted public debate." This was recently said by an honorable judge of the Islamabad High Court. Who said it? My Lord Justice Babur Sattar. I was not actually happy to name someone. It is surprising that this judge, a signatory to the said letter, claims it was meant to be confidential. An urgent inquiry is necessary to determine
how the letter was publicized without first being addressed to the chairman and members of the Supreme Judicial Council. The individual responsible for its leakage must be identified and held accountable. So, my lord, I take your lordships back. I will start reading from paragraph 5 of the CMA that I filed. The Constitution of Pakistan, I hope my lords are there. Paragraph? Paragraph 5, page 2 of the CMA, sir.